Gaseous exchange. So gaseous exchange chapter is really a fun. All you need to know is The last question. Please, can you share the recordings for the human transport in the group? I guarantee you today I will not leave this place unless I send you. And did you subscribe my channel? Yes, sir. Okay. मरियम आप नहीं आज करना है, ठीक है। और वीडियो में आपको भेजूंगा ह्यूमन ट्रांसपोर्ट की 1 2 3 आई थिंक 3 4 for every chapter there are 10 videos. So some of the chapters I've shared, like for some chapters I've shared and the rest I'm doing. We'll be sharing everything over there, resources, notes, topicals, everything inshallah. So right now, welcome AS. We start up late this session, but okay. This is gaseous exchange. So much things are removed from syllabus. Here's the syllabus as well, which tells you what you need to know and what you don't need to know. So I hope you're with me. If I ask you, can you these are lungs, right? It's air tract system. So from your O levels, can you help me understand what's this one? T begins with T. Trachea. Good. Oh my God, it's about dim sun. Trachea. And trachea splits into what? Bronchi. The bronchus is singular, so bronchi, right? And bronchi is plural. Then comes the bronchioles, right? And then bronchioles into so many others which are not in our course, but finally alveoli, air sacs. Yes or no? Yes, sir. Alveoli are where gases get exchanged. Alveoli is plural. So this is alveolus. Hello? Okay, sir. Alveolus. It is surrounded by blood capillary. I'll be sharing you all this. Don't try. You don't need to write so far. Beta, ye kya hai? Capillary. And then alveolus is single cell thick, So there is very dash distance for the gases to get exchanged. Small distance, well done. Short distance? Yes. Okay. So basically, there is cartilage. Have you heard of cartilage? Wow, man, Yes. you know everything. Cartilage is something that prevents collapse. So there is cartilage. Remember, there's cartilage and the trachea. Yeah. So what does cartilage do? It prevents collapse. Collapse समझते हैं ना? Yes. For example, imagine if someone falls from big height. शायद पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी. Yeah. If you fall from, God forbid, if someone falls from height and his trachea gets choked, like, many people would die even before touching the ground. Trust me. The trachea collapsed. So how you help them? By what you call CPR, kya usko kehte hain? First aid. But make sure that you have brushed your teeth. Otherwise, they'll start vomiting. So that first, wo jo mouth to mouth air hoti hai, that is, in fact, to keep open the air track. So बच्चों जो trachea में देखो, here are some structures. If you can see, trachea में cartilage prevents collapse. Can you see the screen I am sharing? Yes, sir. अच्छा, cartilage भी आपने देखना है, and cilia, right? And goblet cells. In a minute we'll draw them. Goblet cells, then smooth muscles, then goblet cells, smooth muscles, and capillary thingy. Okay, so see, I'm drawing. I would like to draw them. Inside of trachea looks like this. This is a little zoomed in version. The inside of trachea has many cells. Some cells are ciliated. They possess cilia. Easy?
समझ रहे हो बच्चों? And Yes. this is O level thingy. Very good. And some cells are like, what you call them? Goblet cells. ये उनके बीच में nucleus है. Like this is also nucleus. So this cell is called ciliated cell. And this guy is called goblet cell. Goblet is the vase. Goblet is, literally goblet means the vase which is used to serve wine. Not necessarily. We can serve anything in this. Anyway, yeah. So, from these goblet cells comes out what we call dash, M cell. Hello, Mariam. What comes out of goblet cells? Anyone? Mucus. Swan the Great, mucus. You seem good student, mucus. So that mucus actually traps what? Dust particles and also the germs. And what would cilia do? Cilia are like vipers. Cilia will move the mucus up, push the mucus up towards throat. And whenever we close the mouth, that mucus goes to stomach. And the stomach is an acid called HCl that will kill the germs if any. So ये पता आपको epithelium, इसको कहते हैं ciliated epithelium. Means inner face of trachea. Inner face of trachea is called ciliated epithelium. Why? Because some of the cells are ciliated. Every epithelium is not ciliated. Some are ciliated. But remember, goblet cell is not the only thing found in the trachea which produces mucus. There are separate mucus glands also. Mucus glands which produce mucus. And Miss Noor Raja, what's the job of mucus? Job of mucus? Yes. It traps dust particles and germs, right? And germs, yes. And what's Usman? Yeah, Usman, what's the purpose of ciliated cells? So he says cilia push the mucus up towards throat. Okay, we are back. There's a little rata-like thing, right? In this chapter. So cartilage is one that prevents collapse. And remember, cartilage is there in trachea and bronchus both. And trachea and bronchus. Bronchus is the next vein after trachea. So in trachea, cartilage is like C-shaped. I can't draw this nice, but anyway. Imagine cartilage prevents collapsing, squeezing of this, right? I hope you understand what's meant by collapsing. तो बच्चों ट्रैकिया में कार्टिलेज किस तरह होता है? सी शेप्ड कार्टिलेज. और ब्रोंकस में भी कार्टिलेज होता है, बट उसमें कार्टिलेज के यूं इरेगुलर ब्लॉक्स, I repeat, cartilage is the soft bone. Like if you have ever, for example, when you eat chicken and there's a bone that can be eaten easily. So that's got cartilage, a soft bone. It's found in our ear as well. Earlobe. Cartilage keeps the airway open. To hold it open, prevents collapse. You understood collapse? So in bronchus also there is cartilage. But in bronchus it's like irregular blocks. Like for example, this is trachea. So there'll be C-shaped cartilage. Yeah, rings of cartilage which prevent it from collapsing. और बच्चों पता क्या, जो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस आता है ना, ब्रोंकस में भी होते हैं ये, but the wall of bronchus has irregular blocks. This language is important because questions ask you with this language.
Beta, am I going fast? It's okay. Miss Meher, okay, where is sir. cartilage found? It's found in trachea and Meher Abbasi, trachea and bronchus. And bronchus? And Noor, beta, what is the purpose of cartilage? Prevents collapsing. Prevents Prevents collapse. collapsing, squeezing. And you know, after bronchus comes the bronchiole. Yes or no? Bronchioles don't have cartilage. Yes, sir. Why? Because air is enough to keep them open. Air pressure. The pressure of air will keep them open. Because they're not too wide, they are quite narrow. In fact, what we need to know from this, and I would strongly recommend you to take the picture of it if you want. This box, please make a picture of it. So to know that Yes, sir, cartilage is found to cut, you know, wait, let me cut some things. You, right now, you don't need to know this. This is all extra. Also, you can remove, you cannot consider this all. You see? Also, you can skip this line. So just a bit of this table is part of your course. Yes. So dear students, my question to you is, cartilage is found in trachea and bronchus, yes or no? Cartilage is found, cartilage is in found trachea and bronchus. bronchus and trachea and bronchus. And then goblet cells, you can see where are they found. Goblet cells, where are they found? You can see the diagram. Bronchus and trachea. Found in trachea and Trachea and bronchus. basically in trachea, everything is there. So goblet cells produce what? Mucus. And smooth muscles, what do? They adjust the diameter of air tract. Smooth muscles can contract and relax. So they actually adjust the diameter. Acha, picture le liye. Sorry, I thought of mobile. So they adjust the diameter, smooth muscles. Noor beta, what do the smooth muscles do? No? Noor, are you listening? Usman, what do smooth... नूर बेटा मोबाइल बंद करें ना ताकि आप क्लास में ध्यान दें. Adjust the shape, diameter, size. They will contract or relax to make the air tube wide, narrow or wide. Yeah, slips. So smooth muscles are found in trachea, bronchus, and bronchiole. You may ignore this word terminal, but simply say bronchiole, right? Because terminal and respiratory. So cilia are found in what? Sir, can you repeat what smooth muscles do? Smooth muscles adjust the diameter of air tract. See, smooth muscles will squeeze, will make the air tubes narrow, and will relax, will make the air tube wider. How will smooth muscles do that? Because they are muscles. Muscles are contractile. They can contract. Noor beta, देखें. If this is, for example, this one is bronchiole, yeah, bronchus. So when muscles contract, so they get narrow, they relax, they get wider. Did you get it? Yes, I get it. The smooth muscles adjust the diameter of air tract. Can you tell me what do goblet cells do? They release mucus. Release mucus, very good. Now is squamous epithelium. Cilia and you know. So you know, alveoli is where gases get exchanged. Yes or no? This is, yes, sir. you can see this one is alveolus. This one. Dim है ना? नहीं नजर आ रहा. नहीं आ रहा नजर. So alveoli is where gaseous exchange occurs. So the cells of alveoli, alveolus is a single cell thing. See? Yes. And outside this is the capillary. Capillary is also single cell thing.
बच्चों समझ आ रही है? Yes. Cells of capillary. Let me draw the cells of capillary and alveoli both. So these cells are actually like this. It's the nucleus. Look, I'm drawing this capillary cells. Like jigsaw puzzle with minor gaps in between. Does it make sense? So these cells are flattened. Yes, do you know flattened means like आटे की चपाती. आटे की चपाती, आटे का पेड़ा. बोले ना, flattened means chapati. So being flattened gives you so much advantage. Number one, this dash the surface area. Yeah, बच्चों, Decreases. Increases surface area. Increases surface area, decreases the distance. Wow. And decreases the distance because it gets thin. And you know, such cells which are flattened, such cells are called squamous. Squamous, I mean, the cells, the layer made by this is called squamous epithelial cell, epithelium. So alveoli is an example of squamous epithelium. Got it? The flattened, thin cells. बच्चों याद रखो, और वो जो ऊपर है ना एयर ट्रैक जो हम पढ़ रहे थे, it is the what you call where I was doing it here, yeah. तो जो ये है ना एयर ट्रैक, ये ciliated epithelium. I mean, if I ask you, what is the epithelium of trachea? Epithelium means inner face. Like देखो ये मैं कर रहा हूँ ये. I'm touching the epithelium inside. Inside of trachea is called. Inside of trachea has ciliated cells and goblet cells. So these cells are standing or they are lying down. Ciliated and goblet cells. Noor and Meher, what do you think? Ciliated and goblet cells appear standing or appear means lying Standing. Standing, sir. Standing. This is why this epithelium, the face of trachea, is also called columnar epithelium. Columnar epithelium. Sorry? Straight. देखो ना इनकी शक्ल देखें. और columnar epithelium समझ हो ना? Columnar. They are standing. इसका एक और नाम भी है. What is that other name? Ciliated. They also call it ciliated epithelium. अच्छा समझ आ रही है? और alveoli and capillary, their epithelia are what? Squamous. Alveoli and capillary का epithelia क्या है बच्चों? Squamous, flattened. अब हमने ये समझना है कि आप मुझे बताएं, what do goblet cells do? They produce mucus. And one more thing also does the same. That is called mucus glands. Hey friends, do you understand my point? No, sir. Means mucus glands also produce mucus. Okay. Meher, समझ आ रही है? Mucus glands also produce. Okay, sir. Mucus glands, look, these are type notes. We provide you for every chapter. So mucus gland also produces mucus. Done? Yeah. And what do smooth muscles do? ये नूर बताएंगे. Sir, they contract and relax. To adjust the diameter. And फिर हम उस्मान से पूछते हैं कि what do goblet cells do? Produce mucus. और फिर हम मरियम से पूछते हैं कि after trachea, what is the next part? What? Bronchial. Bronchus. Then comes bronchiole. Bronchial. Then comes alveoli. Yes or no? So dear students, alveolus is where gaseous exchange occurs. Yes or no? Alveolus is where gaseous, look, this is alveolus.
It is where gaseous exchange occurs. जो alveolus होता है ना वहां पे gaseous exchange होती है, right? So I want you to know some features of alveolus. See, अब आप मुझे बताइए, मैं फीचर बोलूंगा, आप मुझे इसका बेनिफिट बताइए. Alveolus is single cell thick. Wow, single cell thick. अभी हमने बनाया भी था डायग्राम भी. तो मरियम, सिंगल सेल थिक का क्या फायदा होगा? To dash the distance for exchange of gas. Sorry? Shorten the distance Wow, for gaseous exchange. and increase the surface area. हाँ, उसमें सिंगल सेल थिक का वजह नहीं, उसमें है they can expand. Alveoli can expand, they stretch. Right? They can expand. बेटा सिंगल सेल थिक का फायदा जो है ना सिर्फ डिस्टेंस कम करना है, और they can expand to increase surface area. Or number 3, they have closed supply of capillaries. Noor beta, what's the benefit of having capillaries along with alveoli? They are single cell thick. No, but the question is, what is the point of having capillaries so close to alveolus? So that CO2 could diffuse from blood to alveoli and could go blood out, to alveoli. and oxygen could diffuse from alveolus to blood. Yes or no? So gaseous exchange occurs at dash alveoli. Oxygen diffuses from blood. Occurs at alveoli. Oxygen diffuses from alveolus to capillary. CO2 diffuses from capillary to alveolus. And the features of gaseous exchange system are: number 1, they are thin. Number 2, they are capillaries. And number 3, there are so many in number. There are millions of these air sacs. And now, with your support, we would like to understand. We would like to rather. Okay, let's see how you help me. Yeah. Okay, dear friends, please help me label what is it. What is what? I am pointing out. Your job is to guess. आप लोगों ने घबराना नहीं है. You know, Imran Khan used to say. आपने बिल्कुल घबराना नहीं है. Just try with me. 2-3 हम ये करेंगे ड्रिल, आपको समझ आ जाएगा. What is this? इसकी शक्ल देख लो, ये कार्टिलेज है. Cartilage looks like this. और ये क्या है बेटा? डैश एपिथेलियम. Ciliated. अभी आपको मुश्किल हो रहा है ना आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जूम में नहीं है. इधर म्यूकस ग्लैंड्स पे होंगे. नहीं, पेपर में आएगा, डोंट वरी, पेपर में समझ आएगा. ये क्या है बेटा? सर ये वो तो नहीं है, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? सर ये जो आगे बने हुए हैं ये कार्टिलेज. ये सीलिया है? ये कार्टिलेज है. नहीं, जो आगे है सर, ये तो कार्टिलेज, इसके आगे सीलिया है. रुके, ये होगी कार्टिलेज. और ये देखो मसल है. ये मसल की शक्ल समझ है ना? मसल इसी तरह होता है ना, लॉन्ग ऑन वाला, लॉन्ग ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल मसल आ रहा है ना. या तो दीज आर मसल्स. मसल फाइबर नजर आ रहा है बेटा? यस सर. मसल्स कह लो. और ये क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या है? सिलिएटेड सेल्स भी हैं और गॉबलेट सेल्स भी हैं. डोंट वरी, आई विल मेक यू क्लियर. अभी इसको जूम इन करते हैं जरा. तो मुझे बताओ, जूम इन अगर मैं करूंगा. स्मूथ मसल्स की तरह. स्मूथ मसल्स ये वाले, ये दिस वन. ये मसल देखो ना, मसल दे लुक लाइक मसल्स. अच्छा, बीच में म्यूकस ग्लैंड्स भी होंगी. म्यूकस ग्लैंड्स ये हैं, ये वाली. बेटा देखो, अगर जूम इन करो ना थोड़ा सा, आपको पता चलेगा गॉबलेट्स और सिलेटेड, लेकिन यहाँ नहीं पता चल रहा सही था. चलें, लेट्स गो फर्दर. Okay, so let me show you some more ideas. After reduction in syllabus, it got very less. Oops, what stupid I'm doing, yaar. Oh.
जी बेटा, ये क्या है, ये जो कर्सर में पॉइंट आउट कर रहा हूँ, दिस वन cartilage, this one cartilage and this one smooth muscles, this one ciliated epithelium. Yes, no? आगे चलें थोड़ा सा, ये मैं हाइड कर रहा हूँ। नूर मुझे बताओ कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नूर बेटा, और उससे पहले मैं थोड़ी सी तरह चीटिंग करूँ। ओके मिस सर ये नूर, सारा लेबल करना। आई विल बी जी। पॉइंटिंग आउट, और मुझे नूर बताएगी कि ये कौन सा सेल है, ये वाला। जल्दी से बताओ। ये सिलिएटेड नहीं, गॉबलेट। सिलिएटेड सेल, वाओ। और सिलिएटेड ये सेल। मरियम बताएंगी ये कौन सा सेल है, आप सर बताएं। ये भी सिलिएटेड नहीं है। सिलिएटेड, और ये वाला सेल, ये वाला ये गॉबलेट। गॉबलेट। और ये ब्लू वाले क्या है, ब्लू वाले? ये ओ ये माय गॉड, म्यूकस है। न्यूक्लियस। और ब्लू वाले के अंदर क्या है, ये वाला न्यूक्लियोलस। कहां से पढ़ी है भाई? हाँ, किसे? बहन? ओके जी, इसको थोड़ा सा हम करते हैं। आप मुझे गैस कर सकते हो, अभी हमने चैप्टर 1 तो आप साथ नहीं किया, ये डायग्राम जो है ये स्कैनिंग है या ट्रांसमिशन? चले छोड़ो छोड़ो छोड़े। अच्छा, ये वो चैप्टर 1 की चीजें बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, ये भी थोड़े से ये गॉबलेट सेल्स और सिलिएटेड सेल्स मिक्स हैं, ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो डायग्राम वियर्ड लगेगी, लेकिन एज वी गो फर्दर थिंग्स विल गेट इजी। ये अल्वेलस आ गया, तो शुड आई टेक यू टू एग्जाम क्वेश्चंस? रेडी? Yes, sir. ये देखो, इस बुक की ये नोट्स के एंड पे एक्सरसाइज हो, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। एंड सो टेकिंग यू टू द क्वेश्चन एग्जाम। ओके, दिस इज, देखो ये यहाँ से पिक्चर लिया ना, ट्रैकिया को क्रॉस सेक्शन समझ देना, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया यहाँ से। वैसे आपको गुड न्यूज सुनाओ, दिस चैप्टर इज डन। सर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर अभी देना एक दफा, आपको ताकि सारी लिख सके नोट्स। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये जी सर, आप syllabus- भूल ना जाना, मैं आपको नहीं, मैसेज कर दूंगी। ये मैं आपको सिलेबस बताऊं, इसमें हमने कोई चीज नहीं छोड़ी है, देखो सारा इधर से इधर तक। अच्छा, आपको ये टॉपिकल में देखोगे ना, ओहो सॉरी, इलास्टिक फाइबर्स, या आई फॉरगॉट टू टेल यू। देखो बेटा, अल्वेलस में इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। यू नो व्हाट इलास्टिक फाइबर्स डू? इलास्टिक फाइबर्स हेल्प अल्वेलाई स्ट्रेच एंड रिकॉइल। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं, ताकि नूर हमें बताएंगी, व्हेन alveoli stretch lungs get bigger, so pressure in the lungs will go more or less? लेस। less। चलो बच्चों, फिर मेरे साथ जल्दी से मुझे गैस करें कि ये जो क्वेश्चन है ना फजूल से, इनको हम ट्राई करते हैं, और 3 मिनट भी हमारे पास हैं। क्या कहते हैं आप, व्हाट इज दिस, ये वाली चीज? कार्टिलेज। नूर ग्रेट, ये कार्टिलेज है। और देखो ये वाले, ये जो है ना, ये मसल्स हैं जिनसे जुड़ा हुआ है, पता है, बोन है ना, बोन, लुक बोन यूं है, बीच में मसल्स हैं, यूं, मसल्स मेक इट ओपन क्लोज, वरना बोन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। एन, जल्दी से बताओ बेटा, एन ओ पी। N is ciliated cell. सिलिएटेड एपिथेलियम, पी इज O कार्टिलेज, gob P is डी cartilage. ये मसल्स हैं, और ओ क्या है? O goblet cell. ओ म्यूकस ग्लैंड्स। नहीं, गॉबलेट सेल्स एन में होते हैं, सिलिएटेड। नूर देखो, सिलिएटेड अच्छा, एपिथेलियम में mucus ही सिलिएटेड सेल्स भी है, गॉबलेट सेल्स भी है। सही है बेटा, ये इजी है ना, फन है। जी। ये देखो, ये बड़ा मजे का सिलिएटेड सेल्स हैं, गॉबलेट, सिलिएटेड एंड गॉबलेट। एमसीक्यूज बहुत ब्यूटीफुल हैं, दे आर सो गॉर्जियस रियली। क्या कहते हैं आप, ये सॉल्ट है। व्हाट वुड यू सी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ब्रोंकस? ब्रोंकस में आपको क्या नजर आएगा बेटा? कार्टिलेज भी, सिलिएटेड भी, और वेसिकल भी। क्योंकि पता है, इसको इग्नोर करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब पिक्चर टेकन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Sir, what are these vesicles?
या वो चैप्टर 1 की वेसिकल्स नूर इसलिए कि उसमें याद है गॉबलेट सेल्स भी होते हैं ना ब्रोंकस में, तो गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस थ्रू वेसिकल्स। समझ आ रही है? इसको जी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। ये देखो 4 स्लाइड्स में बच्चा देख रहा है, आप मुझे बताएं विच स्लाइड इज व्हाट। क्विक क्विक प्लीज। स्लाइड नंबर 1, इसमें कह रहा है नॉट प्रेजेंट कार्टिलेज एंड ग्लैंड्स नहीं है। स्लाइड 2 और प्रेजेंट क्या है, फ्यू गॉबलेट सेल्स। मुझे बताओ इन तीनों स्लाइड्स में ट्रैकिया कौन सा होगा? ट्रैकिया हैज एवरीथिंग, डू यू रिमेंबर? एवरीथिंग। तो बेटा इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिंग्स हैं तो आर यू ट्रैकिया या ब्रोंकस? महर नूर देखो सी शेप कार्टिलेज मतलब इनकम्प्लीट रिंग। हेलो, यस सर। तो बेटा इनकम्प्लीट रिंग्स ट्रैकिया में होते हैं या ब्रोंकस में होते हैं? ब्रोंकस। देखो ट्रैकिया में हमने पढ़ा था सी शेप कार्टिलेज है ना, इनकम्प्लीट रिंग यस मतलब सर। सी शेप। तो ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज भी है, म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं, गॉबलेट सेल्स भी हैं, सिलेटेड एपिथेलियम भी है, स्मूथ मसल सब कुछ है। तो स्लाइड 2 इज ट्रैकिया, यस नो? मरियम आप मुझे बताएं कि व्हाट इज दिस स्लाइड 4। जो बच्चा बताएगा मैं कहता हूँ जबरदस्त मजा आ जाएगा। दिस वन इज ट्रैकिया एंड दिस वन इज डैश। और एक मेगा हिंट आपको दूं, मेगा हिंट। वो कह रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट है प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज, इरेगुलर ब्लॉक्स, प्लेट्स, ब्रोंकस या सॉरी। तो ये आपका पूरा चैप्टर ट्रस्ट में इन एमसीक्यूज में जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है। इसकी पिक्चर ले लो, सारा सीन सेट हो जाएगा। ये बायो की मैं किसकी सर? ये जो है ना ये इसकी पिक्चर ले लो, आपके 100 में जितने भी क्वेश्चन है ना इसके वर्कशीट करते हुए कीप लुकिंग एट यस सर। आप में से नवंबर में कौन दे रहा है पेपर? नो वन? नूर है ना, नूर के अली अब्दुल्ला तो एब्सेंट आज। ये जो है ना ये आपने याद रखनी है, सो एमसीक्यूज विल बी हेल इजियर। ओके सर। चलो ठीक है, अब जाए आप जान छोड़। सर ये टॉपिक इतना सही है बस? यस बट इट विल टेक टाइम। फातिमा बेटा फिनिश। ये बातें अच्छी नहीं है। सॉरी सर कल इसके फिर हम वो करेंगे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग जो क्वेश्चन आपने आंसर रखे हुए करेंगे हैं तो हम 5%। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द डेस्क ऑफ शाकिर अब्बासी। प्लीज लाइक वॉच शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। आई विल बी